So, hello everyone. Good morning to all. And again, I have come up with live market update and live trading. So, I wanted to show what is happening in the market right now. So, let's see. So, I will open the Nifty graph. And after a long time, if market moving in a range has broken out after a long time, and the up move is very big. Also, what is happening is US market is closed. So this up move, for that reason, there is no other queue. And after making a lot of consolidation for many days, now the market is moving on the higher side. Okay, I will increase. I'll zoom the screen here so that everyone can easily see. Okay. So I will delete some of the studies so that it doesn't become a lot of confusing. So here, let me take 15-minute chart and show what happened. See, market was moving in between 15,900 to 15,500 and 400. It was slowly जो बेस था उसका शिफ्ट हो रहा था ये रेंज के बीच में ही मूव कर रहा था. But since yesterday there has been a smart recovery from the bottom level, and now it has crossed 15,900 and it is reaching 16,000 now. Okay, लेकिन अभी भी 16,000 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है. That is what I'm expecting. But now this is a very fresh move, a very good move after a long time, almost after a month. There is a very good up move in the market. Okay, so I think this up move might continue for few days. अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि थोड़े थोड़े न्यूज अच्छे आ रहे हैं फ्रॉम रशिया ऑल्सो. रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, फ्रॉम देयर ऑल्सो देयर इज सम गुड न्यूज. Basically, Putin has declared that the eastern front of Ukraine, they have achieved victory, and because of that, probably in the coming days, Putin might cut down the war in the eastern front, और slowly करके ये यूक्रेन वॉर कम हो सकता है, और eventually probably by the end of the year खत्म भी हो सकता है. So that, for that reason, I think market might be taking some positive cues out of that, and it is moving higher. So ये एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है मार्केट में, and for that reason I suggested on the Telegram group, I suggested that people should buy 15,700 CE at 297, और ये ऑलरेडी 318 का हाई मार चुका है. मैंने 330 का टारगेट दिया है. इट इज ओनली नाउ 14 रुपीज अवे फ्रॉम इट, बट मेरे हिसाब से ये और भी ऊपर जा सकता है. इट माइट, इफ यू हैव the guts to hold it overnight, this particular option, and if this up move continues and if it continues globally also, ये easily 400 रुपए भी जा सकता है in the next 1 or 2 days. Okay, तो ये है ये प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है. सो मार्केट इज मेकिंग एन अप मूव, एंड आई विल शो यू माय पोजीशन. सो मैंने कल इवनिंग क्लोजिंग के आसपास ओवरनाइट आई सोल्ड 15,700 पीई, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि कल आफ्टरनून जो अप मूव आया, इट माइट कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट डे. सो दिस वाज एक्सपेक्टेड. And similarly, what happened, it has from, I sold at almost 112, and now it is at 28 rupees, and probably I will book my profit here, और अगले पुट ऑप्शन को शिफ्ट हो सकता हूँ. थोड़े मैंने 16,000 के कॉल ऑप्शन सेल करके रखे हैं, क्योंकि आई फील देयर विल बी रेजिस्टेंस एट 1600, but right now it is very close to 16,000. I'm sorry. I feel there might be a resistance at 16,000, but it's already very close to it.
एंड द नेक्स्ट 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नेक्स्ट 1 आवर में वो 16,000 क्रॉस करके कन्विंसिंगली ऊपर जाता है and it stays there and it closes above 16,000, then 16,000 is convincingly broken and I will book minimum loss in this and exit the position. But अगर अब अगले 1 आवर या फिर until the end of the day 16,000 is not crossed and it comes down from there, then that means 16,000 is the definite resistance there and it might not cross from there. Okay, so that is what my study says as of now. Now, why do I say that 16,000 might be the resistance? So you can go to Sensible or you can go to a NSE website and you can check the open interest in this. Okay, ये भी थोड़ा zoom करता हूँ मैं, so you can watch it. So there is a heavy, open interest. Open interest मतलब बहुत ज्यादा selling हुआ है call option का 16,000 का on the Nifty, and this call option writers they start suffering losses if Nifty crosses above 16,000. Okay, and because of that they might और ये एक नहीं है, बहुत ज्यादा है, मतलब 79 मिलियन है, ऑलमोस्ट 80 मिलियन, दैट मीन्स 8 करोड़ राइटिंग हो चुका है वहां पे, 8 करोड़ क्वांटिटी का. एंड दीज पीपल आर वेरी, they have big amounts, they have big quantities and they try to defend that. मार्केट को वो 16,000 क्रॉस करने नहीं देते हैं, बट अगर वो क्रॉस होने लगा, बिकॉज नो बडी कैन कंट्रोल द मार्केट दैट strongly, but if there is a continuous buying and if it crosses 16,000 then they start making they start buying, delivery based buying they start in the Nifty, and because of that Nifty starts crossing even higher. Okay, so that is how, they start making losses and Nifty keeps on moving higher. So that is what I'm saying कि है ना, अगर 16,000 convincingly break हुआ तो वो वहां से और भी ऊपर जा सकता है, एंड आई फील इजीली इट कैन गो टू, लेट्स लुक एट द डेटा इटसेल्फ. ये डेटा लाइव रहता है, सो ये डेटा से हम स्टडी कर सकते हैं. सो 16,000 इफ इट इज ब्रोकन कन्विंसिंगली, इट कैन इजीली गो टू 16,200 नेक्स्ट. 2 दिन में वो 16,200 जा सकता है मार्केट. सो नेक्स्ट 1 आवर to the end of the day is very important, and it is a make or break situation here. यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो यहाँ मार्केट 16,000 के आसपास पे रेजिस्टेंस लेके वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. प्रॉफिट बुकिंग मतलब किसी ने अगर लोअर लेवल पे बाय करके रखा है, दे स्टार्ट टेकिंग आउट सम ऑफ द प्रॉफिट्स एट दैट पॉइंट. सो clearly you can see there is some resistance coming here now. थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट आज का दिन ही इतना स्ट्रांग है कि ये प्रॉफिट बुकिंग ऑब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल द न्यूज दैट इज कमिंग एंड बिग डैडी यूएसए इज हैविंग अ हॉलीडे सिंस 2 days. कल यूएस में इंडिपेंडेंस डे था. So because of all those reasons, there are no global cues. Okay. So today might be a day where it can easily, convincingly cross 16,000, but still it is facing resistance. So that is what I said. Next 1 hour is very important. Okay. So what I will do here now is book little bit of profits here, and then probably in the next 1 hour I will decide which position I should keep and which position I should not. Okay, so until that time, in the meanwhile, let's discuss. My team, they sent me some stocks that I think we should see. So they sent me some of the trending stocks which are going upwards. So I also didn't check that. So I will discuss it live and I'll check along with you. Okay. So first one is Jubilant Industries.
Let's check Jubilant Industries. So we'll check it on 3 hour and 1 day chart. Okay. So there is some news, I guess. So there is a breakout, but again today there is a correction in Jubilant Industries. So as of now, I won't buy this because still I'm not convinced it has come out of its sell trend. तो ये देखिए ये 1 डे चार्ट पे सेल ट्रेंड में गया था, but I'm still not convinced it is out of that. I'll wait probably for a few more days and then buy. Then next is R systems. Same thing is happening here. R systems also. So कल से ही थोड़ा सा ब्रेकआउट आ रहा है बहुत से स्टॉक्स में. That means there is some buying going on. Automotive Excel. So yes, Automotive Excel बहुत ही अच्छी कंपनी है. It delivers axles to ऑटोमोटिव कंपनी जो अपने गाड़ी जो अपने कार का या फिर बड़े ट्रक्स का जो एक्सेल रहता है. दिस कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट. कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक कार्स आने दो या कुछ भी आने दो, एक्सेल का तो जरूरत पड़ेगा ही. सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म. ओके, हमेशा से ही ये इसका डिमांड रहने वाला है. द नेक्स्ट इज automotive companies. Most of the names that my team has given is coming from automotive companies because I feel now the auto sector is going to bounce back again. और इसमें बहुत ज़्यादा breakouts आ रहे हैं. So still I'm not going to buy this ZF steering, but for long term these companies are very good. हमारा थियरी ऐसा है कि है ना, वी शॉर्टलिस्ट वेरी गुड कंपनीज एंड देन वी बाय ओनली व्हेन दे आर वेरी क्लियर ऑन आवर चार्ट. अगर वो चार्ट पे ही क्लियर होगा तभी हम बाय करते हैं. ओके, बिकॉज वी हैव सीन मेनी केसेस लाइक यू नो येस बैंक एंड आरबीएल बैंक एंड मेनी अदर केसेस वेयर इन यू नो डीएचएफएल वो चार्ट पे क्लियर नहीं होने के बावजूद बहुत से जो लोगों ने उनको उसको बाय किया और वो ट्रैप में फंस गए. ओके, so what you should do is you should shortlist a good company and then you should buy only when it is very clear on the chart. So Shanti Gear, it is looking good on the charts, but still I am not convinced, and probably I will wait for few more days for clarity to come. On 3 hour chart it is showing now a rebound. तो इसमें rebound आ रहा है, लेकिन probably I will go ahead and buy if it crosses 250. Okay, so 250 के ऊपर अगर शांति गिर जा रहा है, so you can definitely go ahead and buy it. Okay, next is CGM. Now this is showing on 3 hour charts a very good rebound. For a short term, you can buy this, but long term, if you want to hold, let it cross above 1120, and then you can hold it for long term. But for short term, you can definitely go ahead and buy this. इसमें definitely आपको एक 10 to 20% returns within few days you can easily get in this. Okay. Next is Godrej Consumer Products. So this is also showing after a good selling. इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग आया है, अच्छा करेक्शन आया है इसमें फ्रॉम 1140 1130 टू अराउंड 9 बॉटम इसने 650 का बनाया. मतलब इसमें ऑलमोस्ट 40% करेक्शन आया है इसमें. नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग हियर. वेरी गुड एफएमसीजी स्टॉक. एंड नाउ इफ इट ब्रेक्स आउट अबाउ दिस रेंज, देखिए यहाँ पे ऊपर वो 830 को जाके वहां से फिर से सेलिंग आता है. If it crosses 835 convincingly, only then you should go ahead and buy this. Okay. Now next again FM थीम वही है. मेरा मेरा जो टीम मेरे जो टीम के सामने जो थीम आ रहा है 2 दिन से, वो ऑटोमोटिव मतलब ऑटो एंसिलरीज जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाते मतलब पार्ट्स बनाते हैं, और एफएमसीजी वो थीम आ रही है क्योंकि उनमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है. ओके, so it is showing a breakout now, Dabur, but still it is in a consolidation phase. मतलब सेलिंग होके वही के वही
बॉटम लेवल पे उसमें है ना सपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर. इट हैज करेक्टेड फ्रॉम 660 to almost 4, yeah, 480 तक करेक्शन आया. Okay, that means it also has corrected 30% and it is in a very good buy zone. यहाँ पे आप है ना इसको accumulate कर सकते हैं. The next another FMCG Imami, this also has corrected from, it has also corrected 30% from top. मतलब अच्छा खासा correction आ गया है. But still I won't buy this. Another good stock, Colgate Palmolive, another FMCG stock, बॉटम बना चुका है. ये ज्यादा बड़ा भी नहीं था, उसका ज्यादा उसमें ज्यादा बाइंग आया नहीं था. ओके, so you can go ahead and buy this for ultra long term. Very good stock. It is facing some competition from Patanjali, but still a very good fundamental company and very good products, so you can easily go ahead and buy it for long term. Next is, हाँ, सीमलेस. तो ये मेटल स्टॉक है. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ मेटल स्टॉक्स आर डूइंग सो वेल, बिकॉज कमोडिटी के प्राइसेस अभी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं. टाटा स्टील में भी बहुत ज्यादा करेक्शन आया, बट दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. कुछ मार्केट का खराब कंडीशन हो के भी इसमें करेक्शन नहीं आ रहा है. In fact, it is going on strongly on the uptrend, and I think you should easily go ahead and buy this for long term. Fundamentals of company are very good, and you can buy it at. अगर आपने किसी भी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा होता, you would have easily gained at least 15 to 20%. Okay, so as you can see, in spite of bad market performance, still it is doing well. Okay, so this is kind of indication that in a very bad market